36 लाख बुध ग्रह को जोड़ दीजिए तो सूर्य बन जाता है। सूर्य बृहस्पति से 782 गुना और शनि से 1562 गुना बड़ा है। तो वो सूर्य के इक्वेटर से 8 डिग्री बिलो जो उसका है, उससे 8 डिग्री बिलो प्लैनेट्स मूव करते हैं, जो प्लैनेट्स मूव हो रहे हैं। तो 8 डिग्री नीचे जब चलता है वो, तो इसलिए सूर्य पृथ्वी को कहा गया है कि ये अष्टाक्षरा है। ये हमने कभी नहीं समझा कि ये वेद में और उसमें अष्टाक्षरा अनुष्टुप छंद में है और अनुष्टुप छंद अष्टाक्षरा है और इसके 8 ही वसु, 8 वसु हैं और वो है ध्रुव, धर, सोम, वसु, अग्नि, प्रत्युष और प्रभास। ये 8 वसु हैं। वसु मतलब जो उसकी इग्नाइटिव पावर है, जो उसके इंस्टिंक्ट पावर जिससे ये पूरा अर्थ जो है गाइया जिसे कहते हैं वो मूवमेंट कर रहा है। अब वो 8 वसु हैं और 8 वसु इसलिए हैं कि अष्टाक्षरा है। जब अष्टाक्षरा है तो हमेशा सूर्य के एक तरफ पृथ्वी रहेगी। कभी भी जो रिवॉल्यूशन होगा, परिक्रमा होगी, उसमें हमेशा सूर्य के एक तरफ ही पृथ्वी रहेगी। तो 9 किरणें, 9 रेज आ रहे हैं और यहाँ अष्टाक्षरा है तो 9 into 8, 8 वसु हैं, उसकी पोटेंसी है, उसके वाइटल्स एनर्जी है। तो वो जो इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इट इज ऑल इनविजिबल इंटरेक्शन। वो जो इंटरेक्शन होगा तो 9 into 8 कितना हो गया? 72। और जब हमने रिकॉर्ड किया कि उस इंटरेक्शन के बाद पृथ्वी से कौन सा साउंड निकल रहा है उसके मूवमेंट में 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड जो चलती है, तो उससे निकल रहा है कंग खंग गंग चंग टंग तंग पंग यंग। ये ध्वनि निकल रही है लिरिक्स में, नॉट इन ह्यूमन लैंग्वेज, ये लिरिक्स में निकल रही है, ध्वन्यात्मक है। और ये ध्वनि निकल रही है तो 9 into 8 72 हो गया। तो जब स्वर से घात होगा तो व्याकरण वाले, अष्टाध्यायी वाले बताते हैं कि स्वर से जो घात होगा, प्रतिघात होगा तो व्यंजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉन्सोनेंट बना रही है पृथ्वी। तो 72 व्यंजन और 36 स्वर जोड़ दीजिए तो 108 की वर्णमाला बन रही है। दिस इज, और ये वर्णमाला, अब सुनिए आगे, सुनिए, डोंट बी पैनिक। और ये जो वर्णमाला जो बन रही है, ये जो वर्णमाला जो बन रही है, ये मैन मेड नहीं, इट्स ए नेचुरल साउंड। ये प्रकृति से निकल रही है। और ये इसीलिए जब भी कोई बच्चा, until unless he is or she is polluted by their parents to trained in their own languages, तब तक वो इसी प्राकृतिक भाषा में ही नरेट करता है, बोलता है। और यही नहीं, पशु पक्षी जितने हैं वो भी जब बोलते हैं तो इसी प्राकृतिक ध्वनियों का इस्तेमाल करते हैं। और पंच तत्वों की अगर हम बात कर रहे थे अभी, पंच तत्वों में पहला पृथ्वी तत्व है, सॉलिड। आप यूं करिए, ठप ठप की आवाज आ रही है, ताली जो बजा रहे हैं, ठप ठप की आवाज आ रही है। आप जल बहता है, कल कल की ध्वनि निकल रही है, हवा चलती है, सनसन की ध्वनि निकलती है। आग जला लीजिए, सब जाड़े का मौसम है, अलाव तापते हैं लोग, आग जला लीजिए, धू धू की ध्वनि निकलती है। ये पंच तत्व भी उसी भाषा को बोल रहे हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक भाषा है। और उसको ऋषियों ने सुना, और जब ऋषियों ने सुना और उसको अपने वोकल कॉर्ड के माध्यम से दोहराने का प्रयास किया तो मानुषी भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। उसके पहले आ, वू, ही, फिस यही बोलते थे, उसके बाद मानुषी भाषा का। और इसको भी वेद में लिखा हुआ है, उसका मंत्र है, महावीर जी बता देंगे। वो वेद में लिखा हुआ है कि किस तरह से 164वें सूक्त जो है प्रथम दिग्तमा औचक्थ का, उसमें ही लिखा हुआ है कि किस तरह से ऋषियों ने उसको सुना। और उसको सुनने, जैसे वो किशोरदा थे, वो कभी कभी हो ही करके कुछ गाना गा देते थे, हम उसको दोहराते थे, उस संगीत में उसको मानुषी भाषा में बोल देते थे। उसी तरह से ऋषियों ने उसको सुना और उसको जब अपने वोकल कॉर्ड से दोहराया तो वो उसी भाषा में, वो मानुषी भाषा के रूप में आई। अब सवाल ये है कि ऋषियों ने देखा कि 2 रेडिएशन हैं, इसलिए उन्होंने 2 को छोड़ दिया, 7 लिया, 7, क्योंकि वो ह्यूमन कंफर्ट के लिए ठीक है। 7 लिया और 7 से 8 का गुणा किया तो कितना हो गया? 7 8
56, 7 into 8 is equal to 56। तो 56 हो गया, 56 और 7 जो ओरिजिनल स्वर है उसको लिया, 56 और 7 कितना हो गया 63। तो 7 कौन कौन से लिए, अ, ई, उ, री, ली, अनुस्वार और विसर्ग, इसको लिया उन्होंने। और उसके बाद में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग, अघोष, संघर्षी और घोष उष्म, ये 8 लिया उन्होंने। तो 7 8 56 हो गए, और 56 और 7 63 हो गए। अब उन्होंने कहा कि एक चंद्रमा भी है, उससे भी तो किरणें आ रही हैं, बेशक रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं, लेकिन किरणें तो आ रही हैं, तो उसमें भी ध्वनि होगी, रात को भी होगी उसमें ध्वनि। तो उसको उन्होंने किया, और उससे उन्होंने चंद्र बिंदु जो आप लोग लगाते हैं उसको सिंबॉलिक उन्होंने चंद्र बिंदु ले लिया। तो इसलिए 63 और 56 और 7 63, और ये जोड़ दिया 64, ये 64 हो गए। इसलिए पाणिनि शिक्षा में नहीं है, त्रिषष्टि व चतुष्टि शंभु मते मता, और इसी 64 वर्ण पर वेद की रचना हुई, और वेद 64 वर्ण पर है। इसलिए भी इसे अपौरुषेय कहते हैं कि ये मैन मेड नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हिंदी अगर आपकी राष्ट्रभाषा है, और अंग्रेजी को अगर मान लेते हैं, वैसे ना माने तो चलेगा, अगर मान लेते हैं कि ये विश्व की संपर्क भाषा है, क्योंकि बहुत कम जगह अंग्रेजी बोली जाती है, अगर मान ले, और बहुत लोग आप जैसे जबरदस्ती अंग्रेजी बोलकर बात करना चाहते हैं, सब जगह वर्ल्ड में नहीं बोली जाती है तो अंग्रेजी अगर वर्ल्ड की संपर्क भाषा है, तो संस्कृत जो है वो ब्रह्मांडीय लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज। और दूसरी बात ये बता दूं, जो यहाँ आपको तकलीफ हो रही थी, शशि जी क्षमा करेंगे, जो यहाँ तकलीफ हो रही थी, साउंड नहीं आ रहा था, उसकी फिजिक्स मैं बता दूं कि जितनी भी मैन मेड लैंग्वेजेस हैं उनकी अपनी एक वाइटल फोर्स है, क्योंकि वो मैन मेड लैंग्वेज, दे कैन नॉट काउंटर विद द नेचुरल फोर्स। इसलिए जितनी भी मैन मेड लैंग्वेजेस हैं वो सब इसके ओजोन लेयर्स के अंदर ही घूमती रहती हैं। दे कैन नॉट ट्रांसमिट they cannot exceed even transmit beyond the ozone layer, और ओजोन लेयर 485 किलोमीटर तक है यहाँ से, जो आपका पूरा जो हमारा एटमॉस्फेयर, थर्मोस्फियर, एसोस्फियर, बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आप संस्कृत बोलेंगे तो हो सकता है कि ओजोन लेयर में क्लाइमेटिकली कोई फॉग या कोई वो हो जाए, तो आपको सुनने में या कहीं न कहीं बॉर्डरेशन हो सकती है, वो हो जाएगी। कोई नेचुरल कैलामिटी बीच में आ गई तो आपको वो ट्रांसमिट होने में उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके डोमेस्टिक चैनल्स में भी, टीवी में भी आप देखते होंगे कभी कभी वो हाइपरनेस आ जाती है। लेकिन संस्कृत जो है, क्योंकि संस्कृत उसी से डिराइव्ड हुई और उसी से आपका हिंदी डिराइव्ड हुआ, देवनागरी, इसलिए जब संस्कृत में आप बात करेंगे तो डेफिनेटली वो लैंग्वेज कहाँ से आ रही है। अभी मैं उसका ओरिजिन कहाँ है, उसका ओरिजिन सोलार रेस से है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सोलार व्यू। तो एंटायर सोलार सिस्टम में अगर कहीं ट्रांसमिट करना है, नासा, इसलिए वहाँ पर नासा में, हमारे नासा में संस्कृत की कैप्सूल ट्रेनिंग कराई जाती है। एवरी साइंटिस्ट, इट इज़ अ फंडामेंटल फॉर एवरी साइंटिस्ट टू हैव ए कैप्सूल ट्रेनिंग इन द संस्कृत लैंग्वेज, क्योंकि उनका जो पूरा कैलकुलेशन है वो सूर्य सिद्धांत पर आधारित है। और वो बोलते हैं कि सूर्य, हमने कहा कि ये तो हमारा, बोला आपके पास तो लगद वाला है, ये तो मैदानों का है, और मयांस कल्चर तो मैक्सिको में है, आपके यहाँ कहाँ है, मैं तो यहाँ का था, इसलिए दिस इज़ आवर प्रॉपर्टी, और इसलिए वो बात करते हैं और उसी पर वो कैलकुलेट करते हैं। और उसको समझने के लिए संस्कृत इज़ वेरी मच नीडेड, तो इसलिए सीखना पड़ता है संस्कृत। तो इसलिए वो ट्रांसमिट हो सकती है, संस्कृत जो लैंग्वेज है वो आपकी ओजोन लेयर से बियॉन्ड भी ट्रांसमिट हो सकती है, लेकिन बाकी वर्ल्ड की चाहे कोई भी लैंग्वेजेस हैं वो वहाँ से ट्रांसमिट नहीं हो सकती है। और प्रपंच सार नाम की एक किताब है, उसमें मैंने देखा कि उसमें तो प्रत्येक अल्फ़ाबेट के जो ऋषि हैं उनका नाम लिखा कि आ किसने इन्वेंट पकड़ा, आ किसने पकड़ा, ई किसने पकड़ा, वो एक एक ऋषि का नाम उसमें लिखा हुआ है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब देखिए, दूसरी चीज़ देखिए कि हमारे यहाँ वैदिक में वैसे हार्ट प्रॉब्लम है, पूरा हार्ट ब्लॉक है, मैं कैसे आया हूँ, सी नोज एवरीथिंग, बट इट इज़ सिंस आई एम प्रेजेंट हियर आई हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू यू ऑनेस्टली। हमारे यहाँ गाथ, गालव और अत्रि नाम के ऋषि हुए थे, और उनके जो शिष्य थे वो पश्चिम में गए थे। ये पूरा हमारे
धर्मशास्त्रों में उसका वर्णन है, शास्त्रों में उसका वर्णन है कि वो वहाँ गए थे। और गाथ जब यहाँ से गए तो जो स्कूलिंग हमारे यहाँ थी, जो पाठशाला थी, जो बटुक पढ़ते थे, जो हमारा सिस्टम था, वो वेस्टर्न में नहीं था। तो काफ़ी नोमैडिक होने के बाद काफ़ी देर, उस समय तो कोई प्लेन या बुलेट ट्रेन थी नहीं, तो वो उस तरह से नोमैडिक रूप में ट्रेवल करते करते 1000 ईयर्स में पहुँचे। तो बहुत सारे सिस्टम छूट गया, उनके बोलने के एसेंट्स भी खराब हो गए। तो वो जब वहाँ पर गए और उनसे जो भाषा बनी, उसका जो अपभ्रंश होकर भाषा बनी, गाथ के जो शिष्यों ने चलाई, उसको गैथिक लैंग्वेज कहते हैं। और गालव से जो चला वो गैलिक हुआ, और अत्रि से जो चला वो एट्टिक लैंग्वेज हुई। ये सारी चीज़ें हैं। इस सारी चीज़ों को, ये तो भाषा विज्ञान की बात है, बट व्हाट आई रिसर्च, मैंने जो देखा उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जया माने पृथ्वी, मिति मतलब नापना, तो ज्या मिति इज इक्वल टू ज्योमेट्री हो गया। हमारे यहाँ क्षण है तो उसको सेकंड ले लिया, हमारे यहाँ हो रहा है तो आवर हो गया, हमारे यहाँ मित है तो मिनट हो गया, हमारे यहाँ आरोहणम मार्तंडस्य है, सुबह सूर्य उगता है, वो एम हो गया, एंटी मेरिडियन हो गया। हमारे यहाँ पतनम मार्तंडस्य है तो पीएम हो गया, हमारे यहाँ अहोरात्रि है तो ओवरनाइट हो गया वहाँ पर, हमारे यहाँ सप्ताह है, वीक हो गया, मंथ का, मास का मंथ हो गया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। आप फादर मदर की केवल बात मत करिए। और इंडो यूरोपियन नाम की कोई लैंग्वेज नहीं थी, ये तो पूरा ओरिएंटल स्टडी ने फैलाया था। तो वो बहुत सारी चीज़ें, बंगला है जो बंगला, हमारे यहाँ बंगला बोलते थे वो बेंगलो हो गया, कुटिया बोलते थे, कुटीर बोलते थे वो कॉटेज हो गया, सर्प बोलते थे सरपेंट हो गया। माने एक एक चीज़ को। और आप वो छोड़ दीजिए, कश्मई देवाय हविषा विधेम, अभी जो महावीर जी ने कहा, कश्मई का मतलब क्या है? क मतलब जल, क री मतलब अग्नि, क मतलब जल। कश्मई देवाय, क नाम के जल देवता जो जिससे हमारी सृष्टि हुई, उसको मैं हविष प्रदान करता हूं, उसको कश्मई कौशमों में चला गया। हरि का मतलब सूर्य होता है, या सूर्य की रश्मि होती है, हरित। और जन का मतलब जन विभ्रांति बहुधा, माने पृथ्वी को जन कहते हैं। यहाँ बहुत सारे जन हैं, बहुत सारे लोग हैं, नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं। तो जहाँ हरिजन, जहाँ अंतरिक्ष मिलता है, पृथ्वी के साथ मिलता है, जिसको हम क्षितिज कहते हैं, उसको वो वेद में हरिजन कहा गया। वो गांधी जी वाला हरिजन नहीं, हरिजन, हरिजन कहा गया, उसको ले लिया, होराइजन हो गया। आप देखिए गीता में है, प्रथम है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सु, माने मेरे और पांडवों के पुत्र युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं? युत्सु सब जापान में चला गया, जुजुत्सु बन गया। आप देखिए नास्ति नाभूत, माने सब नष्ट हो गया, फारसी में चला गया, नेस्ता नाबूद बन गया। जालिम्य शब्द है संस्कृत में, माने इसके मतलब है कठोर, निर्दयी, वो जाल्म शब्द, उससे जालिम बन गया। हरम्य शब्द है, स्त्रियों के लिए इस्तेमाल होता था संस्कृत में, उससे हरम बन गया। तो इस तरह से सारे, ये केवल इंडो यूरोपियन जो कहा गया है, आई डिसएग्री विद इट। ये पूरा वर्ल्ड में जो है, क्योंकि हम पहले थे तो इसलिए जो ये संस्कृत का ही एक्सपेंशन है और नाना प्रकार की भाषाओं में बनता चला गया। दैट इज द वे। और इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। और ये बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहता था, लेकिन जैसे आइसक्रीम है, मैं एक चीज बोल के बस खत्म करता हूं। मीठा कुछ हो जाए, मतलब मीठा हो जाए ना, कुछ वो टीवी में आता ना, कुछ हो जाए मीठा, तो आइसक्रीम हम लोग खाते हैं। आप जानते हैं कि पूरा वेस्टर्न जो है ग्लेशियल पीरियड में रहा 12,000 ईयर तक, लेकिन वो नेचुरल आइस की जगह ये आइस क्यूब बनाना नहीं जानते थे। देनो ये टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। ये हर्षवर्धन के काल में प्रयाग में, इलाहाबाद में संगम के तट पर गड्ढा खोदकर चम्मच से पानी डालकर उस पर पुआल डालते थे और उसके ऊपर रेता डालते थे और रात को वो ऐसे छोड़ देते थे और सवेरे बर्फ बन जाता था। उसमें वो कुश का वो डंडी घोंसते थे, सवेरे उसको निकालते थे, गर्मी बहुत होती थी इलाहाबाद में, और उसको चूसते थे, ये हर्षवर्धन काल में। और वहाँ से आइसक्रीम बनने की टेक्नोलॉजी जो है वेस्टर्न को गई। दीज आर ऑल द थिंग्स आई वुड लाइक टू से टू यू। आई हैव सबमिटेड इन फ्रंट ऑफ यू एंड माई health is not permitting, and monitor is standing behind me, so it's all her grace. It is her grace that she is introducing me in this waves assembly in front of such a luminous intelligence here. I am really thankful to her. और मैं इसलिए थैंकफुल हूँ
कि मैं एक चीज बताता हूं कि वेद में, आयुर्वेद में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, ईश्वर के लिए कहा गया। अभी ईश्वर पर बहुत बात हो रही थी। ईश्वर के लिए क्या उसकी प्रतिमा हो नहीं सकती, ही कैन नॉट बी डिफाइंड इन ए मटेरियल फॉर्म। तो जब प्रतिमा नहीं हो सकती तो लोगों ने पूछा कि सर आपने तो बता दिया प्रतिमा नहीं हो सकती, तो अब ईश्वर की आराधना कैसे करें? तो उन्होंने कहा पूर्णमदः पूर्णमदम् पूर्णाश्च पूर्णमुदच्यते, पूर्ण वो भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकल जाए, यहाँ पूर्ण शेष बचे तो ईश्वर है। हम पूर्णांक अगर 9 मानिए तो 9 में से 9 घटा दीजिए तो 0 होगा। वो बोलते, वो ऋषि कहता है कि हायर मैथमेटिक्स की बात करता है कि 9 - 9 = 9 जहां दिखाई दे वहां समझो ईश्वर है। और वो तो कहीं घटना घटती नहीं कि पूर्ण से पूर्ण निकल जाए, पूर्ण शेष बचे, तो वो कहीं होती नहीं, लेकिन होती है। और वो होती है स्त्रियों में। और स्त्री जब एक संतान को जन्म देती है, माँ बची रहती है, तो वो पूर्ण स्त्री बची रहती है संतान। इसलिए हमने स्त्रियों को माता कहा और उसको ईश्वर कहा। धन्यवाद। वैदिक ज्ञान की बात हो रही है, उसके भी वैज्ञानिक पक्ष और बोल रहे हैं डॉक्टर ओपी पांडे जी। तो अब कैसे ख़त्म होगा थोड़े समय में, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि हमने उनको आमंत्रित किया, वो यहाँ आए और उन्होंने सिर्फ उसका जो दिग्दर्शन कराया है वो हमारे 4 दिन के इस कॉन्फ्रेंस के लिए दिशा निर्देश करेगा, ऐसा मैं समझती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर पॉइंटिंग आउट सो मैनी थिंग्स for as a guidance of this conference, and we will be grateful for you always. Your blessing is required. You are God. Yeah. And now you will be happy to know that our second keynote speaker from USA, Dr. Robert H. Schneider, has just arrived from airport. He is a very renowned scholar coming from Maharishi College of Perfect Health, Maharishi University of Management, Iowa, USA. And firstly, we will like to welcome him, and I request Dr. Balram Singh ji to present him a flower bouquet and a memento from Wave side. And now I request you please to come on the dais from the mic and say a few words on this occasion. Thank you. We know or I know now there must be a God, because 2 hours ago I landed in the airport after flying here from the United States, and I'm here still standing, and you're here still sitting. So it's a pleasure to be here with you at this WAVES conference, and thank you to Professor Balram Singh, who I've known for many years, and my university hosted the WAVES conference just a year or 2 ago at our university in Iowa, USA, and now it's a pleasure to exchange the honors and address the group here. Today I'd like to speak with you about the topic of Veda science and aging, an area that I've been working in for a long time, and an area that's universal. Everyone ages throughout history, throughout cultures, throughout languages, throughout societies. Aging is a universal problem. And aging is normally associated with declines in physical functioning, in mental functioning, and in quality of life, and often in happiness. So what to do about it? Today we'll talk about the perspective from Vedic approach to health and how that correlates with modern scientific approach to health and to aging. Although aging is normally associated with declines in physical and mental functioning, there is a small percentage of the population that does not decline or has a slower rate of these declines, or actually improves in health and quality of life. And this is called successful aging. And throughout the ages, man has tried to discover how to enhance successful aging. And this slide shows this pattern of usual versus successful aging. The bar shows percent functioning is normally goes up in youth, plateaus off in middle years,
and often functioning declines after age 40, 50, 60. Thank you. So functioning rises, plateaus in middle age, and often declines in the later years. But the concept of successful aging is how to maintain high quality of life, high quality of health, high quality until the end of life comes, whenever that is. Of course, the other dimension of successful aging is how to extend lifespan as well. I have had the opportunity over the years to study with some of the most renowned scholars of the Vedic approach to health and practitioners here in India and around the world. This is Dr. Brihaspati Dev Triguna, the leading expert in leading Vaidya of his time, and received the Padma Bhushan Award, and many of you might know him, practiced here in Delhi, as well as studying with the founder of our university, Maharishi Mahesh Yogi, about the Vedic perspective on how to slow or reverse the aging process, how to extend life, as well as how that correlates with the modern scientific approach. First, a view from Sankhya. This is the basics of how life develops from the perspective of Sankhya. Then we'll correlate that with modern science. Here we have the level of pure consciousness, or Atma in Sanskrit. And then Atma first manifests itself into ego, intellect, mind, the 5 senses, which later become the 5 Mahabhutas, the 5 elements. So the 5 elements, 5 Mahabhutas, plus ego, intellect, and mind, ahamkar, buddhi, and manas, are the 8 prakritis, said to be the 8 primordial elements that create the whole universe, including human physiology. Out of the unmanifest field, avyakta, or Atma, and creates Brahm, the whole universe. Now let's compare that with the latest advances in modern physics. Coming over here, I had a lovely discussion on in the car on the way here on parallels between modern physics and Sankhya. So this is a graph of the human organism. So human is part of society, part of the whole universe. And what is an individual made of from modern physiology? There's organ systems like the cardiovascular system and other systems. Systems are made up of tissues like the heart and myocardial tissue. Cells like heart cells, myocytes. And then cells are made up of cell components, like the cell membrane, nucleus. And then there are macromolecular systems, and these are made up of proteins. Proteins are guided by RNA. RNA is guided by DNA. So the single DNA molecule in every cell comes from the single DNA molecule at the time of conception in the zygote. So one DNA molecule in modern medicine now contains all the intelligence for every cell in our bodies, all the organs, all the organ systems, and every person in society. And that's the same laws of nature actually in the whole universe. So here the DNA molecule contains the entire intelligence of the universe within us. But physics talks about a deeper level, because the DNA molecule is made up of laws of biochemistry, laws of chemistry, laws of physics underlie the laws of chemistry. And then physics talks about force fields, energy, matter fields, protons, neutrons, and electrons, and the linking force between them, supersymmetry. And these are quantum fields like particle accelerators, CERN, and all that are discovering these force and matter fields. And at the basis of these force and matter fields is a single unified field of all the laws of nature, originally described by Albert Einstein, and now theorized. The most successful unified field theory is called string theory. One string or one field gives rise to all the particles, forces of nature.
including human body. Is this beginning to remind you of Sankhya yet? This is medicine and physiology blown up from the point of view of modern physics and modern Veda. So these fundamental force fields and matter fields can be called the gravity field, gauge fields, and matter fields. Matter fields in quantum physics are protons, neutrons, and electrons. Gauge fields are heat, electromagnetism, atomic energy, nuclear forces. Those are all the energy forces. And then gravity field is actually what holds together and unifies the force and matter fields. And they have their basis, again, in this unified field of all the laws of nature called Atma in Vedic language. And then Ayurveda gives a name to these three fundamental forces. Same forces, I would suggest. So energy forces pitta, matter forces kapha, and gravity, that the principle of movement that keeps everything in balance, vata. And then here are the three doshas of Ayurveda. And here are the 5 elements, the 5 mahabhutas, Akash, Vayu, Tejas, Apas, Prithvi, which corresponds to also these fundamental forces. The 3 and the 5 are actually interchangeable or very closely related in modern quantum physics, agrees with Vedic science. The basis of the whole universe, 5 mahabhutas, 3 doshas, based in the unified field of Atma, creates human physiology on a more material level. Here's modern medicine. Modern medicine functions at this material level, the level of biochemistry and cells, receptors. And Vedic medicine is the theme of this conference, or Vedic science applied to health. I propose to you is unified field-based medicine, because it functions on the level of the mahabhutas, the 8 prakritis, the 3 doshas, all of which are what emerge immediately from the unified field. And ultimately, Vedic medicine works by restoring the connection and the balance between the one field of Atma and the first expressions. And that's the main point of today's talk, as I'll elaborate. Where do we get this knowledge from? Quantum physics, we get from the quantum physics textbook. Vedic science of health, we get from the Samhitas. This is Charak Samhita, the principal, we could say, the principal textbook of the Vedic science of health, and at the topic of today, the Vedic science of health and aging. The first shloka of Charak Samhita is, thus begins the quest for longevity. Thus begins the science of longevity. This is the ultimate purpose of Ayurveda, the science of life, the science of lifespan. So how does Ayurveda say we can enhance lifespan? And if Ayurveda is really a quantum mechanical medicine, as I've just suggested to you, how can we extend lifespan from the quantum mechanical level? Ayurveda talks about the tripod of life, mind, body, and soul, or mind, body, and Atma. On these 3 is the basis of life, and of these 3, Atma is the basis and gives rise to the mind, ego, intellect, and mind, ahamkar, buddhi, and manas, and gives rise to the body, the 5 mahabhutas, and ultimately the 8 prakritis forming mind and body. But we're focusing now on the source of mind and body, the specialty of Ayurveda in Atma-based medicine. Ayurveda talks about pragya parad as the ultimate source of aging and the ultimate source of disease. If aging is a loss of functioning,
then it must be akin to disease or disorder. Charak talks about harmful action of mind, speech, and body is based on pragya aparad, the mistake of the intellect. This is the cause of all disorders, mental and physical. This is the cause of aging. So what is pragya aparad? Pragya aparad can be understood as loss of a mistake of the intellect, loss of memory. Of what? It's not just on a conscious thinking level. I think that's a limited understanding of pragya aparad. I would say that pragya aparad more deeply is when the first expressions here, vata, pitta, and kapha, or the 5 Mahabhutas, lose their connection, lose their memory of their source in infinite intelligence, lose their memory of their source in the field of perfect balance, lose their memory of their connection to the field of immortality. Atma is neither born nor dies. Atma is eternal, the unmanifest source of the changing relative life in Vedic science. And when the material level loses its immortal connection, the doshas and the Mahabhutas lose their state of balance. And when you have that loss of balance, then you have loss of homeostasis, loss of self-repair integrity of the human body. And those are the progressive mistakes in physiology that result in the wear and tear and declines of aging. So here, at this junction point between absolute and relative, between the unified field and the first material physiology, is the ultimate cause of aging, according to Vedic science. And that's consistent with modern science, as we're discussing today. Based on pragya aparad, there are 3 further causes of disease and causes of aging in Ayurveda: environmental cause, bodily causes, and mind causes. Stress and level of mind, physical disturbances, and toxins or disruptions in the near environment, and even the distant environment, the effects of the sun, moon, stars, and planets, graha shanti, or lack of it. And with these 3 levels of cause of disease, based on the one cause, there are 3 levels of treatment. And here we get into the secrets of rasayana therapy. The secrets of anti-aging are based on these 3 levels of intervention. Daiva vyapasriya, creating balance in the environment. Yukti vyapasriya, creating balance in physiology. And sattva vijaya, creating balance in mind. Always that theme is in Vedic approach to health and Vedic approach to reversal of aging: mind, body, and environment, and reconnecting those 3 levels in the relative world to their source in Atma, or the unified field. And this is Charak in Sutrasthana. This is a graphic representation of those points from Charak: environment, body, and mind, the 3 causes and 3 levels of treatment, and restoring their relationships to each other: mind-body relationship, mind-body environment relationship, and ultimately their relationship to Atma, or unified field. This corresponds with the modern point of view on aging. This is one example: chronic stress, chronic imbalances in mind accelerate the aging process. And these are all the physiological effects of stress, like telomerase shortening, free radicals, and stress hormones and inflammation that cause aging from the modern point of view. But we're not focusing, because of time today, so much on those details. But mind causes, and mind and mental stress cause aging. How can we reduce stress of the mind as a very important avenue to slow the aging process?
Again, let's look to the Vedas, and let's look to the Vedic approach, and let's look to meditation, one of the key approaches of mind in Charak and yoga and the Vedic sciences. Charak talks about yoga, and Charak talks about samadhi. When he says happiness or misery arise due to contact of the mind and senses with its objects, with the relative world, but when the mind is engrossed in the self, when the mind is engrossed in Atma, a supernatural healing power comes forth in the person. This state is known as yoga. So Charak is just not talking about herbs. Charak is just not talking about panchakarma. Charak is just not talking about diet and the three doshas. That's there, but that's a limited understanding, I would suggest to you. And from a holistic perspective, Charak is saying you have to have union of the mind with its source in order to have true healing, actually in order to have a supernatural healing and Rasayana effect, reversal of aging. Charak refers to yoga, and here's the yogic perspective on how to do that, how to connect the mind with its source. And thousands of years ago, Patanjali said, Yogas chitta vritti nirodha. Yoga, is the least excited state of consciousness, pure consciousness. And yogic practice is the union of one's mind with its least excited state, which is pure consciousness, samadhi. And samadhi is the field of Atma, union with the field of Atma. And here, this is a graphic illustration of traditional meditation according to Patanjali. This is an illustration of transcendental meditation that Maharishi brought out based on the tradition of Patanjali, brought out to the West and the world, not just the West, but to the modern world. And it's called transcending because in this meditation, we start on the active thinking level of mind. Here we are sitting like in this room, thinking, listening to this talk. Isn't this a great talk? Aren't I glad I came to Waves? Everything is wonderful here. That's thinking. And in this form of meditation, we start there, but then we allow the thinking mind in an effortless, natural way to quiet down, become more quiet, settled, and go inward, and to experience a state of quiet inner consciousness, not thinking, going from thinking, transcending thinking, to non-thinking, to experience this transcendental level of consciousness, which is pure, silent, expanded, unbounded, eternal, immortal experience. This experience of the unified field in modern science, or Atma Samadhi in Sanskrit, but same field, I would suggest to you. So what happens when we experience this level of samadhi through meditation? There are major changes in physiology and neurophysiology in the direction of slowing the aging process with the regular experience of samadhi. That can be measured and verified by modern physiology. And here are some of the correlates from many hundreds of studies. There are changes in brain wave activity in alpha waves, and many other areas, but coherent alpha, which is coherent, orderly brain, settled, restful, but alert. And there are many changes in physiology, reduced breathing rate during the meditation practice and after, many changes in hormones like lactate, and many other physiological changes in this transcending yoga meditation compared to simply resting with your eyes closed. That's very important. You're sitting with your eyes closed, napping, that has its own value, but physiologically that's different from the experience of samadhi.
Samadhi is when you're awake but not thinking. Samadhi is when you're awake but unbounded. Samadhi is when you're eternal on the level of your experience. And physiology becomes more eternal. I've been involved in some of these verification studies for the past 30 years in the United States. Much of this work has been funded by the U.S. National Institutes of Health, been published in leading medical journals, including the journals of the American Heart Association and journals of the American Medical Association. I've toured the world talking with doctors, scientists, media, academic institutions like this esteemed institution of Waves about this work. One of those studies shows reductions in blood pressure with meditation, both systolic and diastolic blood pressure. Blood pressure increases with age. If you're over 50 years old, you have a 90% chance of having high blood pressure at some time during your life. High blood pressure is an epidemic in the West, but you know what? It's also an epidemic in India. High blood pressure, diabetes cause heart disease, the leading cause of death in this country, as well as every other country in the world in 2016. And is correlated with age. The older you get, the higher your blood pressure typically, unless you're meditating. This is another meta-analysis, a study of 107 published studies on different forms of relaxation, muscle relaxation, stress management, biofeedback, and therapies that combined biofeedback compared to meditation. And guess what? And this was published in a major medical journal, that these other techniques, which do not involve samadhi, involve relaxation, but not transcending. There's a difference between relaxation and transcending. Don't reduce blood pressure, whereas transcending does. This is a study, costs the US government about $5 million, cost me and my team about 10 years to do. In this study, we recruited 200 patients with heart disease, older patients with blockage of their coronary arteries. Half of them learned meditation, half got an education control group. We follow them for more than 5 years each. Took 10 years to do the whole study because people came in at different times of the study. And we looked at how long they lived. We looked at their rate of death, heart attacks, and strokes over this 10-year study. And we found that in the education group compared to the meditation group, there was a 48% reduction in the rates of death, heart attack, and stroke. This is Charak in action. Charak said if you attain the state of yoga, you balance your doshas, you restore pragya parad, you regain memory of your inner self. Physiology regains memory. The doshas, mahabhutas, 8 prakritis become in balance, and you live longer. That was the prediction of Charak. This is the prediction of modern science, or the finding of modern science. One verifies the other. This got a lot of news, went around the world, said meditation instead of medication for high blood pressure and heart disease. Meditation instead of medication, right? This is a study on telomerase. Telomeres are a part of our DNA. Every cell has a DNA molecule, and when that DNA erodes or functions with more mistakes, then the cells fall apart, they die, we age. So telomeres hold the DNA together, and telomerase holds the telomeres together. So if we have more telomerase, we can repair our DNA, and we have less mistakes in our DNA, and we maintain youthfulness. This was a study on lifestyle modification with health education and meditation on telomerase. This was funded by the National Institutes of Health. And we found that before and after 16 weeks,
Healthy lifestyle, improved telomerase. This is a dinacharya and healthy lifestyle according to Charak and Ayurveda. And this is meditation according to the yoga tradition, also improved telomerase. So this shows by managing your mind, by managing your consciousness in accord with the Vedic procedures, one can repair one's DNA, lead to the slowing of the aging process. So now we're finishing this discussion. This slide shows the general principle of meditation having the effect of improving physical health. This Vedic and yoga meditation, improving health, functioning, and then quality of life, leading to reversal of the aging process. Thus begins the quest for longevity. Charak begins. And if you go through the text and the related texts, thus concludes the quest for longevity. There you are, science and Veda in aging, mind over aging. There you have it, science and Veda. Namaskar. DNA in every cell of the body, and DNA over age tends to become more mistake prone, doesn't function so well. So there are ends of the DNA, like a shoelace. DNA is like a shoelace, and at the end of it, there's something called a telomere, which holds the DNA together. And then telomerase is an enzyme that repairs the telomere and keeps the DNA together. So if telomerase is higher, you have more strong or intact DNA. And if telomerase is lower, then the DNA falls apart and you age. So you want to increase your telomerase, you want to increase your telomerase by managing your mind, managing your body, managing your health, and then that slows the aging process. Is that okay? I want to ask one question. Yes, sir. You have asked about, you have explained about Atma. Yes. Do you believe there is one Atma, there are many Atma, and who is the source of all Atmas? Yeah. What is your view? One He can, Atma is He Brahm. will be here for 3 days, and he will be chairing a session also on 17th morning, I think. So you can see in the timetable, in the program. Okay. Come to the session and we'll discuss. Very much, Dr. Robert. As our first speaker, Dr. Pandey, he was talking about outer world sciences. So Dr. Robert was talking about internal sciences. So this is the depth of Vedic knowledge, we can say, here in this inaugural session, and yet we have to discuss all these things further in 3 days. Now I am switching to another very brief program, which is a book release function. And Waves in India is going to release its 5th volume. We have already 4 volumes published, and our publisher is Pratibha Prakashan, Radheshyam Shukla ji, I think he is here, Dr. Radheshyam Shukla ji. So please bring the book, and this is entitled Health and Happiness in Indian Tradition. It has 55 papers which were presented in Jaipur conference of Waves India. So the book will, I request Dr. Mahavir Agarwal ji and Dr. Shashi Kejriwal ji to please release this book. And persons who have contributed in this book may buy from Pratibha Prakashan. Photo. Ranjit, photo.
वेव्स के दो लाइफ मेंबर्स की बुक भी यहाँ पर रिलीज हो रही हैं. मैं बुला रही हूँ डॉक्टर प्रतिभा शुक्ला हरिद्वार और डॉक्टर सोमा बसु कलकत्ता. आप अपनी आप बुक लाए नहीं? बुक अच्छा. Okay, हाँ है ये. And another book is written by Dr. Soma Basu. So please come here. Soma Basu. She is coming from Rabindranath Tagore and Swami Vivekanand. चलो जाओ. आपका बुक, इनका बुक है. तुम्हारी बुक तो दे दो. ये लीजिए. Rabindranath Tagore and Swami Vivekananda. Soma Basu. Thank you to scholars on the dais. And now I am inviting Dr. Balram Singh ji for another important program that will be conducted by Dr. Balram Singh ji on behalf of Waves India. Sorry, Waves International, Waves US. I was going to correct that anyway. Thank you very much. It's really great honor to be here amongst you, and so much of enthusiasm and so much of knowledge that we already heard. This has not started just yesterday or today or last year. This is a lot of blood and sweat of many people who have been strong supporters of this idea of Vedic knowledge, and who have carried through this responsibility of providing not only the knowledge but also making a link between what has been going on for a long time and up until today. It has been, the Waves International was established in 1997, if I'm correct, 96. So this is 20 years, and it is a great honor for me. I got introduced to Waves in 2000, and I'm so glad and I'm so happy and so satisfied that I've been involved with this. So today we want to honor, this is the first time we came to India, the land of Vedas, and we thought that it is very appropriate for Waves International to recognize some people. It is really, their accomplishment, their contribution is beyond recognition as far as we are concerned, but we like to give a token of recognition from Waves International. And so I'm going to invite a few people. There are 8 names that I have. 5 of them are here today, and 1 will be joining us on the valedictory address day, and the 2 have not been able to come for some very important reasons. So I'm just going to introduce them, and I'll carry their recognition to give it to them in the United States. And the first one is Professor B. N. Narhari Achar, who has been a physics professor. Now, please come as I invite you. And who is going to give them? Sasi or Sasi Kejriwal?